Great Nicobar, India's southernmost island. A pristine rainforest. A UNESCO Biosphere Reserve. Home to the giant leatherback turtle, macaques, megapods, and to two of India's most vulnerable indigenous tribes. The Shompen and the Nicobaris. But this is what the Government of India is now planning for the region. A massive transshipment port at Kalathia Bay. An international airport just adjacent to the transshipment port. A sprawling township for 3.5 lakh settlers. And a fuel-based power plant to run it all. जंगल सफाई किनार में सफाई करोगे। हाँ, किनारे में सफाई करके इधर बना होता है। इधर नहीं फिक्र बिल्कुल चढ़ना तो ये बोलता है जंगल सफाई करने से इधर करो, नाली के वो समुद्र किनारे में कर दो। हम लोग का पहाड़ में चढ़ना नहीं, टिकरी बिल्कुल चढ़ना नहीं। हम लोग का जो ट्राइबल का जो विलेज जो है इसमें प्रोजेक्ट में आ रहा है, इसमें हम लोग का प्लान जा रहा है इसमें से। और प्रोजेक्ट आएगा तो और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ना जहाँ हम लोग का विलेज है बिलोबाबी और आपका जिंगे हैं, कोकी वो सब है, बिलोबक्का है वो सब, तो हम लोग फिर वहाँ से आने के लिए फ्री नहीं होएगा। हम लोग सब कुछ एकदम चेकिंग हो जाएगा। ये सब आ गया है तो हम लोग तो वहाँ रहेंगे, तो बीच में तो प्रोजेक्ट रहेगा, तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा हम लोग के लिए। मतलब बहुत बड़ा क्या बोलता, हम लोग फ्री नहीं होएगा जब अगर प्रोजेक्ट रहेगा तो। नुकसान तो बोले नहीं, नुकसान नहीं बोला है, लेकिन हम लोग को लगता है नुकसान ही है इससे। हम लोग का लैंड निकलता जा रहा है। After the 2004 tsunami, the Nicobaris from the western coast were shifted to Campbell Bay. The proposed port project will take over these lands that they once inhabited. तो ये जो है, ये जो दो विलेज है ना, ये लवाक, ये एक्चुअली हम लोग का लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, लवाक पिलोबार भी बोलता। बाकी विलेज जो है ये भी तो हम लोग का ट्राइबल विलेज है। हम लोग का इसमें ये जा रहा है, ये प्रोजेक्ट के अंदर में जा रहा है ये प्रोजेक्ट। तो लेकिन ये जो दो विलेज है, लोग फिर से अपना जहाँ इन लोग रहते थे, इन लोग वहीं फिर से जाने चाहता है। लेकिन हाँ ये प्रोजेक्ट के अंदर में तो हम ही लोग का सारा विलेज, हम सारा तो हम लोग का ट्राइबल विलेज, इसमें सब ट्राइबल विलेज इसमें पूरा जा रहा है हम लोग ट्राइबल विलेज। There is opposition among the Nicobaris. हम लोग नहीं जाता कि अपनी जमीन में हम लोग नहीं जाते हैं जब टूरिज्म, कि हम लोग को तकलीफ हो जाए ना बाद में से। हम लोग का फ्यूचर बच्चे लोग आने वाला पीरियड वो लोग तकलीफ हो जाए फिर बाद में लास्ट में। There is also fear of speaking out. कि उन लोग ये नहीं चाहता कि हम लोग आप लोग हम लोग का तकलीफ सुने सुनामी के बाद। तो एक्चुअल में ये लोग तो नहीं रोकना चाहिए था आप लोगों की, क्योंकि हम लोग का तकलीफ जानने के लिए तो आए हैं आप लोग। और हम लोग अब ट्राइबल विलेज में भी नहीं है, क्योंकि ये नॉन ट्राइबल विलेज है, कोई भी आ सकता, कोई भी मिल सकता हम लोग से ट्राइबल जैसा। तो आपका सोमबेन लोग से तो नहीं मिले, हम लोग का तो अलग ये है, लोग ये हम लोग सोमबेन का जो ये ना रूल रेगुलेशन। हाँ, ऐसा लगता है इस लोग उस टाइम में हम लोग को दिखा दिया कि हम लोग जो भी हम लोग बात करते हैं इस लोग तो हम लोग कितना दबाते हैं। वही हम लोग को मीन्स वही टाइम हम लोग को रियलाइज हुआ कि इस लोग ऐसा हम लोग को ये करते हैं। Great Nicobar is a small island of about 900 square kilometers and is home to fewer than 10,000 people. The Indian government says it is pushing ahead with the project to create world-class port infrastructure and boost economic activity in Great Nicobar.
but the project will have consequences. If this mega project is implemented, and then the Samban and Nicobaris would be the payment to NA. State should know its priority. If building a city there and the port town, is it a national priority? In the rest of India will not survive without having this. All of a sudden, there is a mega city right next door. Won't it be a big cultural shock? My concern is with these people. They are the original people. They have not asked anybody's assessment or anything. They just decided that पेड़ काटो and transshipment area बनाओ. किसी को कुछ नहीं पूछा. None of the Champagne or the Nicobaris are saying don't do a particular development. They're saying don't do the nasty. Don't spoil our location and our living space. Go ahead and do what you want, but मतलब हमको मतलब छोड़ दो. डिजास्टर होने वाला है, हम बता रहे हैं. 20 साल पहले सुनामी हुआ था, क्या हुआ करके आप भूल गए. Now you are planning to have a mega city. कहाँ से होगा? How will it sustain? चेन्नई पोर्ट को नहीं डेवलप करके आप वाइजैक पोर्ट को नहीं डेवलप करके एक ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड प्लेस में जाके आप बना रहे हैं. इसका क्या मतलब बनता है मुझे समझ में नहीं आ रहा. From the economic side and as well as from the environmental side, this is a very bad decision. Great Nicobar deserves to be preserved as it is, with only Champagne and Nicobaris around there, would have it. Because it is a protected, it has hundreds of species of plants and animals which do not exist many other places. Beyond its tribes and biodiversity, Great Nicobar has also been shaped by settlers. Ex-servicemen and their families moved here by the Indian state in the 1960s to strengthen its presence on the island. Today, these people remain cut off in remote corners with broken roads, unreliable healthcare, and limited opportunities. The first piece of the project sits on Great Nicobar's east and southeast coast, Galathea Bay, which until recently was a protected wildlife sanctuary. The transshipment port is projected to handle up to 16 million containers a year, placing it among the busiest transshipment hubs in the world. But the port will replace more than 6 square kilometers of untouched tropical evergreen and littoral forest. Immediately next to the port, over 1,300 hectares of forest will be cleared for a 3.5-kilometer runway for an international airport, long enough for the largest commercial aircraft. Another 100 square kilometers of tropical rainforest will be cut away to make room for a vast township of 150 square kilometer. And to keep all of this running, a fuel-based power plant will consume nearly 10 square kilometers of tropical rainforest, wiping out another 2 to 3 million trees. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change estimates that less than 10 lakh trees will be lost to the project. But ecologists warn that this figure is misleading. Great Nicobar's tropical evergreen forests are far denser than those numbers assume. That means there are often 500 to 900 trees in every hectare. Multiply that across 13,000 hectares marked for diversion, and the real loss
could be several times higher, anywhere between 60 lakh to 1.2 crore trees. The Great Nicobar plan is extraordinarily huge, and huge amounts of money will be invested. Why we be talking one thing in speeches and whatnot, and doing just the exact opposite. हमारे लिए एनवायरनमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये कन्वीनियंस के काम करने का हमारा काम नहीं है, हम ये मांगते ही हैं। हम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते। This isn't just about the trees. It is also an anthropological crisis. For the Shompen and the Nicobaris, losing the forest doesn't just mean losing livelihoods, identity, and dignity. It could threaten their very existence. What is the ideal way for the state to engage with semi-isolated communities or isolated communities like the Shompen? Or should it engage at all? We should not intervene. We should intervene only to protect them from outside people if somebody is coming to harm them. You see, these indigenous populations with their distinctive cultural tradition are an amazing gift of nature. They are there for thousands of years. They have lived there and they own the place. Indigenous means they are the original people. For generations, the Shompens have lived in these forests, hunting wild pigs, fishing in streams, gathering fruits and honey, and growing tubers and bananas in small gardens. This isolation has kept their world intact, but it also makes them one of the most vulnerable communities in the islands. Great Nicobar, as we have already been there, it rises up in the middle, not exactly in the middle. The river flows down from the top to the coastal sides, from the center of the island. So in the middle of the island, there is a mound. So the Shompens are very clear that they should not come up the river upstream, in the middle of the forest where their residential areas are, where their scattered habitat is. So that they are very particular, that they should not climb inside or climb in the interior of the island and go up the hills where the streams are. The Great Nicobar project, with its airport and township zones, plans to cut straight through this very interiors. Across the streams and slopes, the Shompen have always protected from outsiders. The Shompens think that if people come into the interior forest and come to the areas which are closer to the hills and the rivers flowing from it, it will cause clogging of the river water flowing down. It's called Ruhai. Ruhai is each stream which is going from the center of the island and going to the coastal area. And so each of those streams are places, are the lineage markers of marriage. तो एक रुहाई में से लड़की बी रुहाई में जाती है. For the Shompen, water does more than just sustain life. So each stream of the water is like a nar, it's like a flow of the water. And the girls have to come from the uphill down to the flat side or the coastal areas. So the boys are from the coastal areas and the girls are from the hilly areas. Why? Because when the river comes down, it washes the soil down. And that fertilizes the plots which grow the pandanus, which is the main crop. So, if I have a wife, then the wife will bring the fertility or the soil's fertility, which is also symbolically the same, that the wife is the way by which it produces a extension of my lineage. That is one of the reasons why, if you see the historical photographs of the Shompens, their houses were built on stilts. They didn't live on the ground level. They lived on the 8-9-10 feet ऊंचा था. तो क्या करते थे वो लोग? सीढ़ी बना के उठा देते. They used to lift the steps so that people wouldn't climb up. And they still say that the Shompens used to
have marriage by capture. They used to go and capture the neighboring areas, and that's one of still the reason why they don't live in large groups. They live in small 4 or 5 families in a cluster. And yet, after centuries on this island, the Shompen remains a mystery. Not even the government has clarity on how many survive here, or where their scattered settlements lie within the rainforest. We don't even have properly mapped locations of where the Shompen live now. I myself have some 3-4 only of geographical sites. There are many others, I don't know. And I am somebody who's worked there for many years. Sarkar ke paas bhi nahi hai. This is some random dots on the map. Researchers describe a mobile life, small hamlets, and shifting with the rains and forest resources. They are scattered residential patterns. They are not all in one place. And they keep moving from one place to other depending on the season and the size of the community. So if once the number of people get together, they decide to move to the place where the pandanus are ready to be harvested or to be cut in that particular part of the forest. 2-3 families will get together and they will move to that part and settle there till they exploit that particular part of the forest. In official filings, the government was told that activities near Shompen and Nicobaris habitations would be avoided. The government in turn told the parliament that no tribal would be displaced. Yet the promises of protection fall apart against the project's own maps. If you open up those forest systems, all the bird life, all the animal life, it just disappears from there, right? They won't use it. So one definite thing which very few people have actually caught on when I've even spoken to them is this, that the Shompen, they're not going to go out and kill Shompen, but then they'll move on their own. No? Jungle ko kaatne ke matlab they're going to move and they're going to go further up north or some other place. They will relocate on their own. They'll be forced to relocate. But where will they be relocating to? They'll be relocating into another Shompen territory. So उन लोगों का बीच में conflict शुरू हो जाएगा. They'll become refugees in their own land. They can't just live in one area. It's not like farmers and peasants who live in one area with 5 acres of jameen and you keep cultivating it from paddy cultivation to wheat cultivation to sugarcane. People might say that, hunter-gatherers don't need so much of land. But the point is that there's less number of species available for exploitation also. And plus there are outsiders there. There are settlers on the island who are illegally poaching and trading in the bushmeat much more frequently and much more easily. Beyond land and resources, the project endangers what is most fragile, the Shompen's isolation. They will be absorbed into the population that will go there, and they will be kind of lose their moorings and sense of self-respect and sense of freedom they have living their own lifestyle or sense of satisfaction. Yeah, the Shompen themselves protect themselves from outsiders' influence by staying away from outsiders. When in fact, sometimes when the infection happens, they isolate the people who have come from the outside. See, the Shompen themselves, the fellows who come into the Campbell Bay and to the AJ with the tribal settlement to collect rice and dal and whatnot, they're only men and boys. So, and it's a fairly regular set or group of people who keep coming from different settlements. There are many others who don't come at all. There's an entire economy that's functioning out of that. But we have nothing. We don't know anything about it. Sarkar is giving them khana. There's much more beyond it. How are they kind of redistributing those assets? How are they redistributing that so-called wealth? And what are they being used for? How is it being? That is not being researched, not being known. Entity doesn't even care about understanding those facts, unfortunately. Now the question is, do we have the right to displace and disturb and disrupt the lives of indigenous people? Because we have bigger goals to satisfy. यहाँ पर तो all of a sudden it is my nature and natural habitat. I'm a Shompen, I'm staying here. Right outside there is a mega city जो अंडमान में कहीं नहीं है. And then there are ships, containers, there are defense, there are everything.
तो मेरा क्या होगा? We really have no concrete information about the social organization of the Shompen, how marriage are conducted, of the life rituals. We only know that they are worshipping nature, they are animists. And as such, the Shompen are completely misunderstood. How come that such a development would take place even in their own small village? But the impact of this development is detrimental, if not genocide, for the Shompen. Across time, India's policies towards indigenous communities have spoken the language of protection on paper. But in practice, it has enabled the slow erosion of language, food, and freedom. For the Shompen, this erasure has come through the state's welfare approach, one that did not begin with an understanding of their food, language, kinship, or ecology, but with imposition. Authorities never studied their healing systems, never mapped their settlements. Instead, rations like rice and pulses were introduced. Getting a rice is one section of development, but we are developing them to be dependent on the rice, which they themselves cannot grow. Welfare also came in the form of clothes. Shirts and trousers replaced charms and loincloths that once carried spiritual meaning and protection. And every exchange was explained in Hindi or Nicobarese, never in the Shompen's own language. But then, how could it ever be explained in a language the state has never studied, let alone tried to understand? We have never made any effort to understand how do the Shompens what do the Shompens classify their forest as? What do the Shompens see their natural resources as? How do they map their area and territory? Why is it a problem? Because the idea is, Sarkari Babu thinks that map करना या जगह को समझने का काम खाली सफेद पोश पढ़े लिखे सरकारी लोग करते हैं. आम आदमी ये सोचता ही नहीं. ये this is wrong. It's wrong. Everybody has a concern for space. Art, music, culture. It's only हमारी धरोहर. You know, उनका हमारे साथ लेना कुछ नहीं है. उनको खाली दवा दे दो और खाना दे दो, बस जिंदा रखो. They have lived in it for so many years. The Andaman and Nicobar Protection of Aboriginal Tribes Regulation was the law meant to guard their reserves. The Ministry of Tribal Affairs in Delhi, the National Commission of Scheduled Tribes, the Tribal Welfare Department in Port Blair, and the Anthropological Survey of India were all tasked with their study and protection. The Andaman Adim Janjati Vikas Samiti, or AAJVS, became the nodal body to run welfare schemes. Even a Tribal Research Institute, ANTRI, was set up. There is a building, but it is abandoned. It continues to draw budgets without staff, fieldwork, or publications. I hold Anthropological Survey of India as a villain. They are the oldest station of Anthropological Survey of India, but they make no effort to go and ask them simple questions. How would you see it? What would be the social assessment of it? There's no concern for it. All their concern is how much has your height increased? How much kilos of oat meat do you eat? Do you eat wheat or do you eat rice? These are very mundane, stupid questions. They may be important in long term, in a longitudinal study, nutrition, how does it impact our health? But there are more major concerns, the loss of cultural identity. Somebody who cannot speak their own language is the worst thing. On the ground, the bureaucracy hasn't fared any better. Short tenures meant that officers were transferred out before they could grasp the realities of island life. It's like an exile for them, coming all the way from Delhi, Andaman, Kala Pani. That kind of shock they have. इधर में आके क्या करेंगे यार? 1 year passes and then they realize that it's a peaceful place, there are good people, so let me do something for them. Then he studies क्या करना चाहिए, he tries to understand, and before he implements that, he's transferred back to Delhi. So the next guy who comes, he will never refer to the work which the other party has done. Again, he will start the same process.
and we have a ruler called the Lieutenant Governor. The same disregard for tribal dignity shows up when the Shompen are used as tools for political mileage. They are paraded in elections as PR stunts. Their votes displayed as milestones of democracy. I'm just wondering how come they have cast their vote recently for the general election. They don't know even political parties whom to vote. So this is maybe to hog the limelight that the Shompen were mainstream. What do they know about what a vote bank is or a politics is or nothing? Panchayat kya hota hai, they have no idea. It's a pass. So getting them to sign on no objection or whatever, it's not happening. It's not gonna. It's not something that is a realistic and democratic way of being able to work with them. And they have the people who live in that forest there. And there's not even one mainlander who can speak Shompen language. Ek bhi nahi. Pura dunya. Who are we communicating? What is the tribal development department using? They're using a guy called Matthias. They go by one person, maybe two or three who can communicate with them. And these are indicators of showing how far behind the times we, as a larger society and the administrative system, is with regard to understanding who the Shompen are, who the Nikobari are. It is a mockery. It is a comedy which is going on. As simple as that, जारवा को क्या मालूम है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, चीफ सेक्रेटरी क्या है, एलजी क्या है, अंडमान निकोबार क्या है करके उसको वो भी नहीं मालूम. Forget India and the world and Prime Minister Modi and अब वो क्या वोट करेगा? First of all, see, I don't know the game. बस मेरे को एक प्लेयर बना के आप धक्का दे रहे हो. It is a democratic setup बोल रहे हो. In the Andamans too, tribal rights were turned into spectacle. Members of the Jarawa, a particularly vulnerable tribal group, were enrolled as voters. किसको वोट डालेंगे? सब तो बोलेंगे बीजेपी को वोट दो. बोला कि हमें प्रॉब्लम होगा, मेरा चमड़ा उतार देंगे ये लोग, सब बीजेपी को डालना है क्योंकि मालूम है 8 जन वोट डालेंगे, अभी उसमें से कोई कांग्रेस डाल दिया तो. But this performance of inclusion went further. Tribal communities were put on public display for outsiders, stripping away dignity and respect. There are incidents, documented, recorded incidents, where airport pay, they get people to dress up as Jarwas, painted in black paint, and dance and perform the welcome ceremony, which no Jarwa does. But why do you have to do that? It's like saying, Palam airport, if I get dressed up like a BJP ka public member with a saffron colored kapda and a red flag in my hand and take slogan of a particular religious denomination, will that be tolerated? Why should it be done? But why this is not raised to the people? Why are we asking some stupid idiot experts like me to talk about and comment about it? This is a matter of all the people. The same gaze has long shaped the language used for tribes. Labels like hostile or jungly that cast entire communities as threats. These labels became the convenient excuse for interventions in the past. One of the most lasting is the Andaman Trunk Road, a highway in South and Middle Andaman that cuts through what was declared a protected Jarawa reserve. When the Andaman Trunk Road was constructed, it's like splitting your home into two and bringing people to ogle at you. In the name of tourism, Jarawa tourism, safari, बस सबको देखना है. और इंडियन मेंटालिटी, आई एम जस्ट ओपनली, मैं तो सबको बोलता हूँ, इंडियन मेंटालिटी, इधर में एक कैब ड्राइवर जाएगा एंड ही विल चेक अ मिडिल एज मैन, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके, सर जारवा देखेंगे सर, क्या है जारवा, सर एकदम नंगे रहते हैं, हाँ सही में नंगे रहते हैं, कितना रुपये लेंगे, 4,000 6,000 में दिखाएंगे सर, वो तो बोलेगा मेरे को देखना है जारवा. बट नाउ द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज डन वन वंडरफुल थिंग, सबको समझा दिया कि कपड़े पहनो. You remove the clothes when you are inside the forest, but when you are near the roadside,
सब कोई जीन्स पहना है, मैक्सी पहना है, पहन के सब खड़े। आप देखो मेरे को। The tribesmen are now enticed to throng the Andaman trunk road, and they are hankering on either side of the road for petty articles. The Supreme Court had said that ATR should not pass through the backyard of the Jarvas. What happened to it? Nothing happened. The road functioned. To avoid the road, the government came up with this idea: we can make a navigation sea road. We will introduce a ferry going through it. Ferry भी नहीं चलती है. The ferry doesn't go through. People say ये बहुत time लगता है. हम road से ही आएंगे. So Supreme Court का बात भी कोई सुनता नहीं है. ATR चलता है. The Jarvas sit there like Bhikhari, and people go there and they photograph it. Then when the police makes a film of the naked Jarvas dancing, then suddenly government becomes aware of it. World, Human Rights and Survival International shows that, why is the police people photographing naked Jarvas dancing on the ATR? Then it suddenly becomes aware. Some American gets killed who was doing kayaking in the Sentinel Island. Then we suddenly become aware of it. Otherwise, the Sarkari Babus were all going there. For the Jarawa, these interventions did more than just split their forest. They seeped into everyday life, altering language and identity itself. हमारा काम है उनको सेव करना, ट्राइबल के साथ में कोई बाहरी आदमी को इंटरेक्ट नहीं करना। और ऐसा हो गया आज के डेट में ट्राइबल जो है सुबह उठ के ये पूछ रहा है कि मेरे को दारू कहाँ मिलेगा, ये सोचता है। अगर उनको एक टाइम में शराब नहीं मिलेगा तो उनका हाथ पैर कांपना शुरू हो जाता है। पेपर में तो लिख देता ऑफिसर के आपको शराब जारवा जो है मिलना नहीं, ये जुलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन हकीकत में क्या होता है, मैंने देखा अपना आगे से, मतलब जो है पोचर्स लोग उनके घर पे सोते हैं और उन्हीं के साथ में रहते हैं, तो उसमें इनहेबिटेड तो कुछ मतलब पीवीटीजीएस वाला तो कुछ दिख ही नहीं रहे। मतलब इन फ्यूचर में उनका हालत मेरे को ऐसा लग रहा है और आने वाले कुछ सालों में तो ग्रेट अंडमानी स्टेप हो जाएंगे। ग्रेट अंडमानी आज का डेट में जो है पूरा तरह मतलब खत्म होने वाला है उनका मतलब देखा जाए तो उनका जो है डिस्ट्रॉय हो गया मेन जो आपका जो है। तो वैसे टाइप का भी ये जरवा भी कुछ दिन बाद ऐसा हो गया, क्योंकि जरवा को पान खाने की आदत है, उनको जर्दा सुपारी की आदत है, उनको अल्कोहल की आदत है। This warning draws from the fate of the Great Andamanese. Once spread across the islands, they now survive only as a few dozens on Strait Island. Disease, displacement and dependency erase their language and way of life, a history that shadows every new intervention in these forests. 1960s, the Great Andamanese I have mentioned, but some section of the Great Andamanese, some sub-tribes, they took to begging on the street. They were begging on the street. Some anthropologists had suggested to the administrator here to rehabilitate the Great Andamanese in Strait Island. It's about 60 nautical miles from here. These Great Andamanese were the first Andamanese tribe to have made contact with outside world. In 1966, when I went to Andaman, at that time their population was 33, which was several thousand in 1858, and it kept on reducing because of death and disease. Whatever the time and whatever the current government has to take notice of these things and try to correct the earlier mistakes. The relocation of the Great Andamanese did not just uproot them from their land, but also confined them to Strait Island. What was framed as rehabilitation became another layer of dependence and forced assimilation. In a way, the Great Andamanese have been completely annihilated. They were pushed away. They were the people here. The fate of the Great Andamanese was shaped by neglect and displacement. The same neglect runs today through the very institutions created for tribal welfare.
The Andaman Adim Janjati Vikas Samiti, a government trust, has not held a meeting in nearly a decade. It's a public trust, which means by the government law and regulation, there has to be every 2 years there has to be a meeting, and a statement has to be given कि पैसा कहाँ खर्चा किस काम के लिए किया गया था. पिछले 9 साल से मीटिंग नहीं होती है. उसका कौन जिम्मेदार है? कौन उसकी बड़े अडानी का पोर्ट का पैसा खर्चा नहीं होता है, उसके लिए सब कुछ करते हैं. लेकिन एक आदिवासी के लिए ये जो स्कूल का खर्चा होना, ये कहाँ जाता है वो पैसा? Where does that money go? You know, there's no accounting of it. एक बार एक जो जारवा का जो एक डोंगी का केस हुआ था, मतलब दूसरे एरिया का जो ये शोलवे साइड जो एक कोस्टल एरिया है, तो उस तरफ से जो आदमी काफ़ी सारे इनलीगल हंटिंग पर्पस से मतलब रिजर्व एरिया में जैसा एंटर करते थे या फिर जारवा के साथ में इंटरेक्ट करते थे, तो उसके बदले में जारवा को जो है मतलब ये दारू और ये तंबाकू और जो उनको मतलब उनका मतलब हैबिटेट में नहीं है वो आइटम भी उनको दे रहा था. The Dongi case wasn't unusual. Multiple reports have pointed to outsiders entering the Jarava Reserve, poaching, trading alcohol and tobacco, and allegations of sexual exploitation of Jarava women. And all this was made easier by the Andaman Trunk Road. Watchdog groups and media investigations have repeatedly flagged failures in the welfare system. And yet, on the ground, little has changed. सब लागे ये बहुत हाल है दूरा दाम लोग पीछे के खवा रहे हम लोग डोंगी यहाँ से निकाल डोंगी निकाल से हम लोग डोंगी देंगे फिर हम लोग सीन लिए लौड़ा इसमें जीरो तो पूरा चारा शामा तारू शाफ लागे देख. The Jarava and Great Andamanese were drawn into welfare system politics and then exposed to dependency and abuse. But the Sentinelese refused every intervention. Sentinelese told us, you can give us coconut, but don't put your foot on our land. Why? What are they protecting? They are protecting their culture, their lifestyle, their autonomy. Unlike the Sentinelese, another tribal group, the Nicobaris of Great Nicobar had to accept state help. But their relocation after the 2004 tsunami changed their lives drastically. ऐसे ही बोली का कन्फ्यूजन था कि जाना भी है नहीं जाना भी, अगर जाएंगे भी तो क्या होएगा उधर. वैसे तो अपना वैसे ये तो कैम्बल पे हम लोग का लैंड ही है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ शिकार करने आते थे, मतलब उतना कोई डर नहीं है. लेकिन फिर भी जो अपना जगह जो होते हैं ना, जगह जहाँ लोग पौंड होते हैं, तो उसको जोड़ने का वो भी नहीं रहता है. इसलिए तो ठीक है, अभी के लिए फिलहाल बेटर है, लेकिन हम लोग का यकीन था कि हम लोग वापस जाना ही है. The relocation has not just physically displaced people, but it has failed to recognize this very important facet of island social ecology, of governance systems, working alongside and with those governance systems for improvement of the place, for improvement of livelihood, economy, and so on. The relocation cut off ancestral and supernatural ties. It reshaped how the Nicobaris lived. हम लोग तो एकदम हम लोग का माइंड तो फ्री रहना चाहिए. जैसे कि आपने पूछा था ना, हम लोग नेचर के एकदम करीब है, वो सही है. हम लोग नेचर के एकदम ही करीब, हम लोग का जीने का जो लाइवलीहुड जो होते थे वो भी पेड़ों से होते थे. अभी तो हमको लगता है ये थोड़ा दूर हो गया, हम लोग इधर आके थोड़ा दूर हो गया. जैसे कि कुछ भी काम करते हैं हम लोग, कुछ क्राफ्ट या फिर कुछ थोड़ी या घर. अभी तो हम लोग को लगता है कि हम लोग अभी बहुत दूर है. फ्री फील नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपना बस्ती में नहीं, जैसा पहले सुनामी में होता था. हम लोग कुछ तो फ्री में लोग रहते थे. जो भी काम होता था हम लोग अपना ही मर्जी से कहीं या शिकार करना या मच्छी बनना या प्लांटेशन करना या कोई अपना रोजी के लिए, तो हम लोग अपना चले जाते थे. मिस तो बहुत चीज़ करते हैं, क्योंकि
जैसे हम लोग रहते थे। वो सब जो छोटी मोटी यादें था ना, जैसे पापा लोग के साथ थे तो वो सब मिस कर अभी देखो यहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम लोग को मतलब कमाने का वो हमेशा यही सोच रहे हैं कमाने पैसा आएगा, लेकिन पहले हम लोग ये सब नहीं सोचते थे। हम लोग ये नहीं सोचते थे कि हम लोग कमाओ, हम लोग ये सोचते उठो काम करो ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, नारियल भी है, नारियल तेल बना लेते हैं, तेल के लिए खर्चा नहीं करते थे। You have been able to move a person, an entity or a family and a group to head a kinship group. They have been able to progress because an ancestral way of life has been respected and revered and followed. Families were shifted into tin colonies, completely ignoring their ways of living. What was meant as a short gap arrangement became long-time exile. ठीक है, अगर वापस नहीं जा पाते तो कैसे होएगा? वहाँ पे डेवलपमेंट है, वहाँ तो जंगल ही हो जाता है। बहुत खराब है अभी ना, मीन्स इस तरह सब शेल्टर बनाया ना हम लोग को, ना टॉयलेट ठीक है, ना कोई फैसिलिटीज एकदम खराब, ना हम लोग का पाइप सब ठीक है, क्योंकि सनटेक भी खराब हो गया, इस तरह सब जगह है हम लोग का, वॉशरूम तो एकदम खराब है, मतलब कैसा रहेगा वो जगह अभी? इस तरह से मीन्स ना दोबारा से रिपेयर कर सकते थे ना, वो भी नहीं करते इस लोग। ठीक है, एक्चुअल में तो हम लोग पहले से हम लोग बोला जस्ट सुनामी के बाद तो हम लोग वापिस जाना चाहते थे सेम, क्योंकि हम लोग को पता था कि प्रॉब्लम आ जाएगा हम लोग के साथ। प्रॉब्लम जैसा है ना, जैसा हम लोग रहते थे ना, वो तो उस तरह नहीं रह पाएगा अगर हम लोग अपना खुद पस्ती नहीं जाने से। तो हम लोग तो खुद सुनसान में रहते थे, सुनसान में रहते, कोई बाहर हम लोग के बीच में नहीं आता। Today the impact is cultural. In Campbell Bay, Nicobarese children study in conventional schools, and many do not speak their own tongue anymore. With each generation, they grow distant from the traditions that once shaped their identity. मे भी उस लोगों को लगता हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, मे भी हम लोग अभी तक क्या बोलते उस लोग का लेवल में नहीं आए, क्योंकि हम यहाँ के स्कूल हम गए ही ऐसे, वो आके मीन्स बच्चा लोग को, ट्राइबल बच्चा लोग को लेके बहुत मीन्स अलग से ही ट्रीट करते हैं यहाँ पे। मीन्स उस लोग को मीन्स अच्छा चीज़ सिखाने का बजाय उस लोग गलत चीज़ सिखाते हैं, मीन्स डिस्क्रिमिनेट करते हैं उस लोग को। जैसे कि बच्चा लोग को मीन्स अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, रीडिंग सब करते, तो उस लोग को सिखाना मीन्स नहीं सिखाते और उस लोग को दबाते। बच्चा कैसा आगे जाएगा इस तरह होने से? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आता है, जो बड़े जैसे ये प्रधान, जो MP सब जो आते हैं हम लोग के पास, उनसे डिमांड करते हैं कि नौकरी चाहिए, नौकरी का जो सीट रहता है वो कम है। और हम लोग कहीं भी जाने से आप लोग ST आप लोग को मिल जाए, हम लोग कोर्ट आके मेरे से पढ़ा लिख के भी कुछ काम नहीं करते अभी तक ऐसा ना, उम्र ही निकल गया। हाँ, मेरा देखो अब बहुत जन स्कूल छोड़ दिया बच्चे लोग हम लोग की जगह में, क्योंकि हम लोग को देख के हम लोग उस लोग पढ़ा लिखा बाहर जाके भी अपना मम्मी पापा से दूर होके भी उस लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे सब बच्चे लोग का माइंड में आ रहा है। अब हुआ है अभी भी नहीं, बच्चे लोग बोला कि आप लोग ऐसे ही बैठे हैं, क्या करने जाना करके। नौकरी नहीं होने से भी हम लोग कैसा भी हम लोग जिंदा रहता, ये भाई बस्ती में तो पैसा है, वैसा तो रहेगा हम लोग, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग को सब कुछ खरीदना पड़ता है, सब्जी खरीदना, मच्छी खरीदना, क्या क्या खरीदने, तो उस तरह नहीं थे हम लोग जिस समय हम लोग बसते हैं। ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है सुनामी के बाद। It goes back to this little analogy, I'm sure you're aware of it. You teach a man to fish rather than provide him fish, he or she'll be able to kind of fend on their own. If you make them dependent on you, so all the work comes on Sarkar, no? The changes have also reshaped social life, especially for the Nicobarese women. दरअसल हम लोग अपना खुद की जगह रहते हैं, हम लोग को बाहर का मतलब डर का नहीं है, क्योंकि ना अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग को कौन देखेगा। अपने मतलब फ्रीडम इस तरह है ना कि अभी हम लोग कहीं भी जाए तो एक दूसरे को लेके जाना पड़ता है। अभी देखो और हेल्पफुल एक तो नेचर था हम लोग का,
अकेला एक जगह पर कहीं भी चले जाता तो फिर कुछ उल्टा पुल्टा जो होते हैं कमेंट करते हैं। ये मतलब ये वो करती है कि अकेले अकेले जाती है। एक्चुअली यहाँ तक तो क्या बताऊँ, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हुआ है उस तरह कि तुम हमेशा घूमती रहती है, क्या घर में कुछ काम नहीं करते या फिर शो दिखाने के लिए आते हैं करके। You have already marginalized them by removing them from their ancestral land. That's sad. Sarkar can easily help them go back to where they belong and where they want to be. And our Sarkar is not, I mean, I'm not trying to paint a bad image of Sarkar. Sarkar is not, it's a huge set of human resources which does not have the ability to kind of go down and sit with these people and work with them. That is the problem. It's imposition rather than understanding and working together. हम लोग को बॉयकॉट किया जाएगा, हम लोग का तो हम लोग को हटा देगा लगता है। हटा दिया जाएगा। अभी हटाएगा कहाँ जाएगा, यहाँ से हटाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग, वही है। और क्यों हटाएंगे ऐसे कूलर, क्योंकि ना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने का ऐसे सोच रहा है और हम लोग ऐसे दबाने का तरह हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग को तो कुछ मिलेगा नहीं। वैसे अभी से ये सब हो रहा है तो बाई चांस अगर 1 लाख 2 लाख मतलब लोग जो आ रहे हैं तो और भी हो जाएगा, है ना। अभी इस तरह हो रहा है तो और भी हो जाएगा। The Shompen themselves have various spaces in the particular area, which are definitely and within what I would refer to as respected and revered spaces. Some are food gathering areas, some are places of ancestors, some are places of where they would be able to hunt and gather, and they are revered. They are revered in a particular way and a fashion. So those will all be kind of destroyed, and no one has been shown any interest in being able to understand these facets of those forests, right? And with the very fact that villages along the west coast, Kokio, Nikobari villages, Kokio, Ingloy, Ulaba, have been slated to become tourist resorts or infrastructure developmental areas, just shows that we don't care about the fact that people who actually have been living there 20 years before and have been living there for centuries until 20 years. They've been pushed to the margins in Campbell Bay, in Great Nicobar. The Nicobaris are known for leading calm and quiet lives. Even anger is unfamiliar to them. But displacement and the proposed project are slowly pushing them there, changing not just their land, but their very nature. Another step in the erasure of who they are. ऐसा डिमांड जो नहीं होता ना गवर्नमेंट से, तो स्ट्राइक हो जाता, तो हम लोग को भी बोलता कभी कोई आप लोग भी शामिल हो जाओ स्ट्राइक में, वो धरना में बैठो। तो अभी हम लोग को ये वो सब अभी हम लोग को आदत नहीं है वो सब स्ट्राइक करना, धरना में बैठना, वो सब जो हम लोग तो सब क्या बोलता काम में रहने वाला आदमी लोग है ना, जिनकी शांति वाला आदमी लोग। पर हमें घर से सोच ही निकलते जाके थोड़ा लड़ाई करना, लेकिन नहीं होता हमसे। हम लोग बाद में हम लोग सोचते हैं ना कि हम लोग की यही जगह में रहना है, वजन से कुछ अभी तो कुछ होता है हम लोग जो कभी देखा नहीं, अभी ये सब होता है अंडमान में। Alongside the Nicobaris are the settler families of Campbell Bay. ये गवर्नमेंट का प्लानिंग था 1965 वार के बाद में, क्योंकि कुछ बाहरी शक्तियां जैसे चाइना हो गया, दूसरे देश हो गए, इस आइलैंड में कोई नहीं रहता था। इसको ऑक्यूपाई करने के लिए दूसरे देश अपना जोर लगा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे बसाया जाए। Life in Campbell Bay meant isolation and constant shortages. Survival depended on what little the government ships could bring each month. जैसे भी तैसे हम लोग कटा टाइम, आज कुछ कल कुछ टाइम बीतता गया। अब शिप है जो महीने में एक बार आता, नीमक है तो दाल नहीं है, दाल है तो नीमक नहीं है, चाय पत्ती नहीं है। सरकार का तरफ से मिलता था हम लोग को राशन, और राशन इतना था कि उसमें इतने इतने कीड़े चलते थे। चलो जैसे भी गुजारा किया हम लोग, फिर आधा एकड़ हम लोगों को इधर जट्टी बाजार में किचड़ बस्ती बोलते हैं उसको, आधा एकड़ दिया। अभी शिप जो है वो वीकली शिप आ रहा है, पहले तो 10 दिन 15 दिन में आता था, अभी शिप आ रहा है, वीकली शिप आ रहा है, ठीक है। अभी और डोनियर आ रहा है वीक में 2 बार, और पवन चॉपर आ रहा है, तो ठीक है। लेकिन इमरजेंसी पड़ जाए तो हम लोग बहुत कटे हुए हैं बैलेंस से। அங்கிருந்து டைரக்ட் இங்கே அனுப்புகிற டாக்டருக்கு வராங்க பாருங்களா, வராங்க ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு டைரக்ட் இங்கே டாக்டர் டியூட்டியில் போடுறாங்க।
ஒரு சீனியர் டாக்டர் கூட இருந்தா நல்லா இருக்கும். फैसिलिटी जो है मेडिकल में इतनी नहीं है, आपको कोई डायग्नोस नहीं हो पाता है, आपको ब्लड जो है सही तरह से डायग्नोस नहीं हो पाता है, टेक्नीशियन नहीं है, क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। पहले हमारी सुनाई होती थी, आजकल हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। पहले ये अफसर थे हमारे दुख तकलीफ समझते थे, अभी हमें जर्नल कर दिया गया है, कोई हमारी सुनाई नहीं है। आते हैं टाइम पास के लिए, आते हैं चले जाते हैं, अपना घूमने कछुआ देखने आते हैं, या क्या हम बोलना नहीं चाहिए वैसे, तो वो चीजें आके यहाँ पर पिकनिक करके चले जाते हैं। Basic and fundamental resources like food, water, transportation are very limited on Great Nicobar, especially for a settler community who have crafted out over several years, and that definitely can improve. I mean, as long as you leave the indigenous people to themselves and they can choose what they want. But the people who've been settled on the island, they definitely need a much better, much different approach. It is this long experience of neglect that shapes how many settlers view the project. For them, it's not destruction, but a chance at growth and opportunity. हमारी इकोनॉमिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, अगर वो प्रोजेक्ट आएगा तो हमारी इकोनॉमिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी, लोगों के पास काम रहेगा, आज के बच्चे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा काम मिल जाएगा, ये एक चीज़ हो जाएगी। और ये प्रोजेक्ट से क्या कि यहाँ पे रोड भी बनेगी, जैसे हमने कहा, आपने देखा तो रोड काफ़ी ख़राब है, उस रोड का काम भी मिल रहा है, तो धीरे धीरे करके हमारी भी सुविधाएं बढ़ेंगी। जैसे अभी अनएम्प्लॉयड जो बच्चे घूम रहे हैं, अभी क्या इधर कोई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है, कुछ जॉब नहीं है, तो बेचारे दारू की नशे की ओर जाते हैं। तो प्रोजेक्ट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं अपने रास्ते में अपना परिवार चलाएंगे। You go and ask them, all are happy. क्यों 50, 60, 70 साल पहले आप लोग लेके आके हमें इधर में बैठा दिए to safeguard this place and retain it as a part of India. We are all ex-servicemen. हम भी जोश में आके यहाँ पर सेटल हो गए, बट ये 70 साल में क्या फैसिलिटी दिया आपने? आज भी प्रॉपर बस सर्विस नहीं है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, 70 साल के बाद में। सो व्हाई शुड वी रिमेन? आप आओ ना, ले लो, यू गिव अस कॉम्पनसेशन, वी आर विलिंग टू गो बैक टू द मेनलैंड इंडिया और कम टू पोर्ट ब्लेयर एंड सेटल। कुछ जंगल अगर इस प्रोजेक्ट के लिए कटता भी है तो ऐसा कोई हमारे को ऐसा उससे कोई भी वो नहीं होगा कि गर्मी हो जाएगी या बारिश नहीं होगी। उसी तरह हमारी सरकार ने कुछ जमीन, अगर यहाँ जो पेड़ कट रहे हैं उसके हिसाब से हरियाणा, मध्य प्रदेश में पेड़ लगाए भी जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत जो पेड़ कटता भी है तो उसको हमको इतना सोचना नहीं चाहिए एनवायरमेंट के हिसाब से, कि देखिए तरक्की के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, और आप नहीं करवा, पेड़ नहीं कटेंगे तो तरक्की नहीं होगी। But Great Nicobar is no ordinary site for development. This is one of the most seismically active zones in the Indian Ocean, struck by some of the deadliest earthquakes and tsunamis in living memory. Tsunami, which occurred on the 26th of December 2004, was one of the most powerful ever experienced by mankind in recorded history. Nature has actually taught us a lesson, in 2004. So we all know that, starting from Burmese coast to all the way down to the Indonesia, the entire region is actually ripe for earthquakes anytime. This is what we always say, that, when you go for that kind of the construction that is being planned there, it is almost, it is not a proper thing to do. In 2004, when the tsunami struck, Great Nicobar was among the worst hit. इस टाइम पे हम लोग गिनती नहीं कर पा रहे थे। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ 18 किलोमीटर में। यहाँ हम लोग पानी में समुद्र किनारे रहते थे, जहाँ मेरा घर था, और मैं दूसरा को बचाने के लिए मेरा बच्चा लोग चले गए और मेरा घर में खुद पानी भर गया। ஒரே ஒரு பின்னு கூட வைக்கல இடத்துல, அந்த வீட்டுல எல்லாமே அடிச்சிட்டு போயிட்டு கம்ப்ளீட். எப்படி இருக்கும் நினைச்சு பாருங்க. எனக்கு அன்னைக்கு இருந்தது என் கையில ஒரே ஒரு வேலை மட்டும்தான். இந்த வேலை இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை, எதுவுமே இல்லை சார். அவ்வளோ போயிட்டு வாஷ் அவுட் ஆயிட்டு எல்லாமே கம்ப்ளீட். 2004, we find that the areas like Andaman or places in Nicobar, there are many areas which are actually fallen under the sea, sank under the sea, and that will keep lying there for many years. So that is again another problem, because of the tectonic shifts
the land also can, change the level, so it can go under the water. So whatever you are constructing close to the sea, like a port, such a huge port, half of it will go under the sea. So that is what we have seen during 2004. Such a scenario can be repeated again. Yet in November 2022, the government granted final clearance for the Great Nicobar project. It is that not that the administration or Lieutenant Governor, they don't understand. They also understand. It is, demand by the center, ये करना ही है, the order by the center, ये करना ही है, that is it. और कुछ सुनना ही नहीं. सबको पता है डिजास्टर होने वाला है, सबको पता है. Right from activists से लेके researchers से लेके scientists से लेके environmentalists लोग, सबको पता है. All are concerned. And the government is not concerned. And that is it. End of the story. When people draw these plans far away from the islands, they perhaps forget that it is the Shompen and Nicobaris whose lands, language, and ways of life that will be completely altered. I will not say anything against the government, but the government has to do what it believes to be done. If I were the government, I would avoid disturbing the Shompen and the Nicobari. You have a small needle and you have a this size magnet, and you keep how the needle can protect itself. City will absorb them and they will become servants of the people there. Our mazdoor ka kaam milega. But menial jobs they will, if they are, and they will lose their community life, their sense of self-respect. Will there still be a Shompen or a Nicobari? He would be somebody else, because we are identify ourselves not only physically, primarily as cultural persona.